to start the recording. Yes, is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so yeah, let's begin with it. So this is the course code PMA 108, Algebra 1. Algebra 2 is there, which you will be starting in second year. So in this lecture, I've just prepared firstly, I'll give you the course overview and then I will start with the content. Let's see what follows. So what is that about the course? So this is the course objective. So this course objective clearly reads, the course intends to impart knowledge in the areas of group theory and linear algebra with an aim of enabling students to apply the concepts learned to other areas. So that's the objective. So clear from here only, you will be having these two as the main components. And this is your LTP. I've already told you the meaning of this: 3 lectures, 1 tutorial, 0 practicals. It's not a lab course. And so it makes it 3.5 credits. So that will add up to your credit requirements. So every course has been designed in a way that it has course objective. So we want, once you study that course, these objectives should be fulfilled. Now I'm giving you the course contents. On LMS, I have uploaded all these things. The syllabus is there, complete form. Here I have shared the screenshots of the same. So basically this course is divided into 2 major parts. The first being linear transformations. Actually, it's not just linear transformations, it's more than that. It's linear algebra. So we have linear transformations, matrix theory, system of equations, rank, determinant, all these things, minimal polynomial. So these are all technical terms. और इसमें से काफी हो सकता है आपको already आपने पढ़ा भी हो. जो part already आपको पता होगा या पढ़ा होगा, so we'll just revise that briefly. And the new things, I will try to add new things more and more जो आपको नहीं पता है और जो हमारे अभी PG के level के हिसाब से होना चाहिए. So I will be focusing on that. This is one part. Another part is group theory. So this group theory, so you can say this course is a combination of the abstract algebra and the more linear algebra, because I just hope you are familiar with this term, abstract algebra and linear algebra, right? So linear algebra has something to do everything with matrices, lines, geometrical. So geometrically, it's based on all linear things. But abstract or modern algebra, we do have group theory, then rings, then fields, then modules. So we do have algebraic structures in that. But in this course, we have both the flavors. One is abstract part, this group theory, and the other is the linear algebra part. So they are interlinked, but इतना ज़्यादा नहीं, means हम उनको independently भी पढ़ सकते हैं. So that is why I will be first starting with this group theory. So in this group theory, you can see these are the contents. You have center, normalizer, centralizer, homomorphisms, cyclic groups, permutation groups, and all those things. So it's very vast. So it although it formally says we'll start from center, but you will see I'll start from the beginning only, just for the completion. Assuming कि आप लोगों को थोड़ा सा idea है group theory के बारे में, groups के बारे में. These are the books which are listed as the recommended books in the syllabus itself. Hoffman-Kunze is for the linear algebra part. Herstein, Ian Herstein, this is topics in algebra. This is for the algebra part, the group theory part. This is also for the group theory part, and the rest of the books are also for that. Now, I will be following this extensively, this book, Galilean, for the abstract algebra part, means the group theory part, right? J.A. Galilean, Joseph A. Galilean, Contemporary Abstract Algebra. This is the edition. Means I personally like this book, and even you will also be seeing once you read this book that this has plenty of examples, because most of the books are kind of theoretical, right? तो हम theoretically concept समझ लेते हैं, but एक होता है कि बहुत सारे examples हमें practice करने के लिए मिले, so that is there in this book. So
right now. Okay, do you have any idea how you are going to access these books? Any plans in your mind, or anybody of you is having आपने ये टाइटल सुने हुए हैं पहले, ग्रेजुएशन में भी आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है बीएससी में, सो इफ यू वांट टू सी एनीथिंग कि ये बुक्स आपने देखी हैं या आप अलग बुक से पढ़ते थे, सो यू कैन टेल मी. Ma'am, I have already read this book in graduation. Galen. Yes, ma'am. Galen has Yeah. also read. Ma'am, I Galen. have Hoffman and Kunizar. Okay, हुफमैन पढ़ा है आपने, ठीक है. So it's good to hear that because you're already familiar with these books way, like एक बुक का, हर एक बुक का अपना एक स्टोरी टेलिंग वे होता है कि इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को डील करते हैं. So if you already have that book, so that's good, but if you do not have, abhi right now I cannot say that you can access to the library because you do not have access to the physical library in the campus. So इस बुक की informally telling you, so there is a soft copy also available, so you can just search and download it. I cannot provide you that because of the copyright issue, so just search it and download it. But if you really want to buy and invest this book, I would say this is an investment. If you buy this book, this is really a great book because it's not like कि MSc के बाद आपको ये books use नहीं आएंगी. Even in MSc, you're going to, even in your second course, Algebra 2, so there will be ring theory and field theory as well. So this book contains everything. So even if you think you can buy this book, so that's well and good. But otherwise, if you want to do with the soft copy version, so you can download that. So firstly, because start हम इससे करेंगे, so that's why I'm focusing more here. जब हम linear algebra वाला part करेंगे, the most पे आएंगे. But this book is also nice. Means you can obviously at a time look at more than one book. You should do that. You should never just read from one book. You should read from more than one book. Yeah, ये भी अच्छी है, but the point is, mean books तो सभी अच्छी हैं. It's not like कि something is bad about it, but the point is हर एक author का एक अपना style होता है लिखने का, तो उसकी notations बदल जाएंगी. आप एक बुक फॉलो करो उसके नोटेशंस के लिए, एग्जांपल्स ट्राई करने के लिए फिर आप डिफरेंट बुक्स पे जा सकते हो. जैसे तो ग्रुप की जो बाइनरी ऑपरेशन की फॉर एग्जांपल नोटेशन है, तो वो गैलिन में कुछ और होगी, दूसरी बुक में वो नोटेशन बदल जाएगी. सो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, यू जस्ट फॉलो वन बुक and try examples from other book. And I will be also doing the same with you. I will be giving you assignments and tutorial sheets, तो उसमें collection of examples होगा which I will take from different books. So in case आप एक ही book follow करते हो और वो जो assignments और tutorial sheets अच्छे से कर लेते हो, so that is also going to be more than sufficient. But personal suggestion is you should be exploring it as much as possible yourself. And try to make habit of reading from books. I do not know about you people, but जो UG students है हमारे undergraduate students, these days what they are doing is engaged in reading online. So वो text से पढ़ लेते हैं कि online कहीं पे कोई article मिला, but what happens is usually whatever you are reading online, we are not authenticating that. Means हम उसको वारंटी नहीं कर सकते कि ये जो लिखा है ये सही ही लिखा होगा, क्योंकि अगर आप एक रैंडम आर्टिकल से पढ़ते हो या कहीं टेक्स्ट से पढ़ते हो, इवन इट मे बी फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल you should be able to reproduce it if you are able to read it from a book and understand from a book. So the trust which you get from a book is important. So that's all about these books. I just hope you follow this. Again, I'm by emphasizing on this point because I have seen this in previous years. The students are not interested to read the books. They just want notes. They just want slides and notes, and that's it. They want to clear their exam based on that only. So please do not, inculcate that kind of habit. Always make good habits of reading the books. Okay, so now as I said, I will be first starting with the group theory part. So anybody is there who has not studied group theory in graduation in your BSc? You can tell me. Is there anybody जिसने नहीं पढ़ा है group? Me. It's me. Okay, what's your name? Shishikant. Okay, so anybody else?
ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इवन आपका मैंने वही बताया था, कोर्स कंटेंट आपका थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा था, अज्यूमिंग कि आप लोग ग्रुप थ्योरी ऑलरेडी पढ़ के आए हो, बट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. सो दोज हु ऑलरेडी नो दीज थिंग्स यू कैन जस्ट revise your concept, and those who are first time studying these things, so it will be good for them to learn. So ये आपका formally syllabus का part नहीं है, but I have started from the beginning only. So let's see, what do you mean by a group? Before understanding a group, let me define binary operation. So what do we mean by binary operation? So in the beginning we have a set. Let G be a set. A binary operation on G is a function that assigns each ordered pair of elements of G an element of G. So it's a very kind of abstract definition. We need to figure out word by word what does this mean, right? I know you already might be knowing the meaning of binary operation. So we have a set, and on that set we apply an operation. So basically operation is nothing but a function. So function सबको clear है कि function क्या होता है? Everybody knows what is a function. So you have a domain, you have a range, and there is a mapping defined. इसके elements को domain के individual elements को हम किसी ना किसी element पे map करेंगे. So we know what is a function. तो ऑपरेशन भी यही कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन. इट्स असाइनिंग ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एलिमेंट ऑफ जी. तो जी में से आप ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, लाइक इफ यू राइट इट फॉर्मली मैथमेटिक्स में जो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दैट इज ए कॉमा बी. इट्स लाइक जैसे हम रियल नंबर्स पे लिखते हैं कि 2 डायमेंशनल रियल स्पेस है, तो ऑर्डर्ड स्पेस का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड एलिमेंट का मतलब क्या है, 1, 2, राइट. अब इसको ऑर्डर्ड एलिमेंट क्यों बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है? कैन एनीबडी टेल व्हाई डू वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर? Right, we call it ordered pair because the order is important here, right? आप geometrically सोचो, geometrically the point 1, sorry, the point 1, 2, say if it is here 1, 2, so that means this is 1 and this is 2 unit, and if I change the order the point will be 2, 1, so I know geometrically 2, 1 will be somewhere else, right? So this is 2 units and this is 1 unit. So the order is important. It's not just any two elements कि आपने numbers बता दिए, एक number 1 है, एक number 2 है. In which order you are representing, that is important. So that is why it's written as A comma B. So the meaning of A comma B is going to be different from B comma A in general. So that is the meaning of ordered pair. So what this operation is doing, it is mapping the ordered pair to another element of G. So G है कोई set है, ठीक है, इट्स अ सेट, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. ऑब्वियसली फॉर्मली यहाँ पे लिखना चाहिए दैट वी डू हैव द नॉन एम्प्टी सेट, उसमें मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे हमारे पास, तभी हम उसकी ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई कर पाएंगे बाइनरी ऑपरेशन की, क्योंकि बाइनरी मीन्स 2, it's applied between 2, so minimum there should be 2 elements. Okay, so what it is doing, so a comma b को ये मैप कर रहा है किसी एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट पे. वो कैसे मैप करेगा दैट पार्ट विल कम लेटर, बट समथिंग इज देयर. सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. अब उस ऑपरेशन को बुक्स में कोई उसको ओ से डिनोट करता है, दैट ए ओ बी. Sometimes we denote it like A star B. Star is operation that is acting between A and B, and it can be A dot B. In many books it's used as, by default this binary operation is denoted with a dot. Although जो ऑपरेशन होता है हर बार ही मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, बट या पढ़ोगे कुछ बुक्स का कॉन्सेप्ट वैसे है कि दे ऑलवेज कंसिडर इट डिफॉल्ट डॉट, but that dot does not mean always the multiplication only. So A dot B is also the way to represent a binary operation, A star B, A O B, and even some books like this Galilean follows this. It's A into B. It's simply writing AB. Okay, so it's by default understood कि कोई simple नहीं है, but AB means there is a mathematical binary operation going between them. So A dot B or AB is going to be some element. ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फंक्शन तो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो ना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन. एंड एलिमेंट ऑफ जी मीन्स ये जो रिजल्टेंट आएगा ए बी का, तो ये भी जी का ही एलिमेंट होगा. ओके, सो इट्स नॉट लाइक
कि आप जो ऑपरेशन अप्लाई करो दो एलिमेंट्स के बीच में और वो एलिमेंट उस ग्रुप में उस सेट में हो ही नहीं. अभी हम सॉरी ग्रुप की बात ही नहीं कर रहे, हम सेट की ही बात कर रहे हैं. G is just a set. So this is important. The element should be there only in the same set. Then that operation we call the binary operation. So it maps every ordered pair within the set itself. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Right, so we can have examples, right? So we have like if you add two real numbers, so 2 plus under root 3, so 1 is 2, that's a real number, root 3 is a real number. If I'm adding two real numbers, so this itself, this is real, and this to completely 2 plus root 3 is also a real number. So if you add two real numbers, you will get a real number. So what we can say is the operation of addition is binary in the set of reals. तो हमने reals number का set लिया है, उस पे operation कौन सा लगा है? addition. अब जब हम बोल रहे हैं addition और उसके बारे में कुछ explain नहीं कर रहे हैं, तो that means it's the default addition, जो हमें पता है, बचपन से हमने सीखी है कि addition ऐसे ही की जाती है. Because this is also going to happen. हम group theory पढ़ते हैं या आगे ring theory, field theory पढ़ेंगे. They simply keep calling it addition, multiplication, but then they say कि नहीं, addition का मतलब ये है. So sometimes वो बोलते उसको वही है जो हमें पता है, but वो addition करनी कैसे है, they can define it as a separate operation. We'll have examples like that. But यहाँ पे अब अगर कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बोला addition, so that means it is the usual addition. You might have read this word कि usual addition means the way we add. So this is a binary operation because दो real numbers को add करोगे तो real ही आएगा. Similarly, you can have plenty of examples. You subtract two integers, you will still get an integer only. So the subtraction over the set of integers is also a binary operation. So can anybody give me an example of an operation which is not binary? इन्हीं में से आप कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो कि कोई दो एलिमेंट्स लिए एक सेट के, कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाया कि आंसर डिफरेंट है, उस सेट में नहीं आएगा. Ma'am, division in integers. Yeah, that's perfect. Division in integers. So if you divide two integers, we may not get an integer, right? If you divide 4 and 2, 4 by 2, the answer is 2. That's okay. That's an integer. But in general, it should be for all, right? It should be for every ordered pair. So if you do 3 by 4, so this does not belong to the set of integers. So you can have examples of an operation which is not binary. Similarly, you can create your own examples and then check whether this is a binary operation or not. Now, why we are discussing this binary operation? Because this is a fundamental. जब आपने एक सेट बना दिया, आपने एलिमेंट्स में ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए कि इस तरीके से एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, उनको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, देन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने स्टार्ट होते हैं, तो ग्रुप वहां से बनेगा. Okay, so with this I am going to give you the definition of the group. This is as such, मैंने ये snapshot लिया है book से ही. So this is the way it is defined. Sorry. Let G be a set together with a binary operation. So now you already know the meaning of binary operation, usually called multiplication. यही मैंने बोला है कि जो Gaussian है तो वो multiplication ही default उसको बोलता है. That assigns to each ordered pair of elements of G an element in G denoted by AB. तो वो A dot B नहीं लिख रहा है, उसको AB ही लिख रहा है. We say G is a group under this operation if these properties are satisfied. So this is first property, associativity. So the operation, this is what the meaning of associative property is, कि अगर आपका जो operation है ये वाली property को satisfy करेगा, A dot B into C, means you have 3 elements, तो पहले आप A B में ऑपरेशन लगाओ और फिर जो आंसर आएगा उसको C के साथ ऑपरेट करो, और you do it in the other order. पहले B C में लगाओ और फिर जो आंसर आएगा फिर A के साथ ऑपरेट करो, so the answer is same. A B C ऑर्डर नहीं बदला है, but the way they are operated, तो पहले A B है और फिर C के साथ है. So this is the meaning of associativity. तो अगर कोई भी ऑपरेशन ये चीज satisfy करेगा, so that is satisfies the one of the conditions of being a group. I'll give you examples.
and this is the next property, identity element होना चाहिए उस set में. So there should be an element E called the identity such that AE is E, A is A. जैसे identity हम बोलते हैं कि which maps every element to itself. जैसे आप multiplication की बात करो तो किसी भी रियल नंबर को, किसी भी इंटीजर को, किसी भी रैशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर. सो a.1 इज ऑलवेज a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल्स. मतलब रियल्स तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एंड सिमिलरली इंटीजर्स में भी, एंड सिमिलरली इन जनरल जिस सेट को भी आप ग्रुप बोल रहे हो तो उसमें आपका कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा कि उसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए, यू गेट द सेम एलिमेंट. एंड देन यू हैव द इनवर्सेस. So the definition of inverses, for each element in G there is an element B in G such that this. तो आइडेंटिटी होगी, फिर हम इनवर्स की बात करते हैं कि अगर आप दो एलिमेंट्स ऐसे ढूंढ पा रहे हो सो दैट a डॉट b इज सेम एज b डॉट a इज सेम एज identity, so then we say they are inverse. Again talking about the example, so 2 dot 1 by 2 is 1. अगर आप रियल्स की बात करो सो नंबर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 by 2, मींस क्योंकि अगर मैं 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी. सो इट्स लाइक a डॉट b इज e, सो a इज 2, b इज 1 by 2, आइडेंटिटी इज 1. सो अगर आप हर एलिमेंट का उस ग्रुप में इनवर्स फाइंड कर पा रहे हो, मीन हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. अब अगर कोई सेट ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल, ये फॉर ऑल होना जरूरी है कि सभी एलिमेंट्स के लिए ये होना चाहिए, देन दैट इज नोन एज अ ग्रुप. और यूजुअली जब हम ग्रुप बोलते हैं तो ग्रुप हमें फिर ऑपरेशन बताना पड़ता है क्योंकि एक ही ऑपरेशन है ग्रुप में. अब usually it is called multiplication as they are saying, but in general when we will be doing examples, so there you have to specify because हमारे जो binary operations है basically, तो they are broadly addition and multiplication kind. तो हमें बताएंगे कि this set is a group under addition or this set is a group under multiplication. So there we will tell. And now there is one more point I would like to make here कि आपने ग्रुप की डेफिनेशन इससे पहले भी पढ़ी होगी, बुक्स में पढ़ी होगी, तो मे बी यू विल बी गेटिंग द डेफिनेशन विद 4 प्रॉपर्टीज, राइट. तो 4 प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज क्लोजर लॉ. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी. थर्ड प्रॉपर्टी इज existence of identity, and the fourth property is existence of inverse, राइट. अब एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स वो तो यही लिखी है इन्होंने, इसको 1 2 3 बोला है, तो ये कहाँ गया क्लोजर लॉ. सो क्लोजर लॉ बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ही डिफाइन कर दिया व्हेन दे आर सेइंग इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. सो बाइनरी ऑपरेशन का जो मैंने मीनिंग बताया था उसमें ये लिखा था कि वो उसी एलिमेंट में ही उसी सेट में मैप होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर, दैट a डॉट b should belongs to G for all AB belongs to G. This is the meaning of closure. हम कहते हैं this set is closed under of this binary operation, closed under addition, closed under multiplication, that if you apply the operation it belongs there only. So there should not be any confusion कि इसमें तो ग्रुप की 3 ही प्रॉपर्टीज हैं बट 4 होती हैं, तो वो जो चौथी है क्लोजर लॉ है उसको वो डिफॉल्ट ऊपर उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन में इंक्लूड कर लिया है. So basically you can say there are 4 properties: closure, associative, identity and inverse. Is the definition clear? We'll come to examples. अभी ये सिर्फ definition है. So in case anybody is having doubt, you can ask. Right, so let me go ahead. तो ये ग्रुप का मैंने explain कर दिया है आपको. These about these properties. Yeah, so nothing there. And yeah, one more definition you can say. It's now you say हमें ग्रुप पता चल गया, अब abelian ग्रुप क्या होगा. abelian ग्रुप होगा if AB is BA, otherwise non abelian. That means पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर. पहली प्रॉपर्टी क्लोजर means AB belongs to G for all AB belongs to G. Second property associative, AB C is A BC.
third is identity, AE is A, fourth is inverse, AB is BA is E, right? अब ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी जरूरी है। अब एक फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर एडिशनली भी ग्रुप सेटिस्फाई करता है तब उसको हम अबिलियन ग्रुप बोलेंगे। उस फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मींस इफ AB is BA, for all AB belongs to G, then the group is said to be abelian. The name of the property is commute करना, commutative, कि चाहे आप A dot B करो चाहे आप B dot A करो, आंसर सेम ही आएगा। और if any group is satisfying this property for all elements, अब इनवर्स में कंफ्यूज मत होना, इनवर्स में तो इट इज सेटिस्फाइंग बट दैट इज विद द इनवर्स, मतलब एवरी एलिमेंट इज डेफिनेटली कम्यूटिंग विद इट्स इनवर्स। हर एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ तो कम्यूट कर ही रहा है, AB is BA is identity, but this is in general. With every other element, if every other element of the group commutes, then we say the group is abelian, otherwise the group is non-abelian. So this is a characterization जो हम बनाते हैं कि अब मैं आपको ग्रुप का एग्जांपल दूंगी and then I will ask कि is this an abelian group or a non-abelian group? So you have to check this the property of commutativity, right? And now we move towards the examples जिसमें हम ये properties को verify करेंगे. So theoretically what happens if you have been given a question कि verify or check whether this particular set under this operation forms a group or not, so you need to verify. आपको सारी properties verify करके देखनी है theoretically to ensure कि वो group है कि नहीं है. यहाँ पे तो मैंने already examples लिखे हैं, but this is a to do home task that you verify all the properties for all of these sets. Yeah, so the first example is the set of integers under addition. So if you take the set of integers, so this is the usual notation of integers, it's a Z symbol with this line over here. So this under addition, so this is a notation how to write a group symbolically. Z with आपने बता दिया ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, प्लस। अगर आपने उस प्लस को स्पेसिफिकली नहीं डिफाइन किया है कि इस प्लस का मतलब क्या है, दैट मींस इट इज अ यूजुअल एडिशन, द वे वी नो हाउ टू ऐड टू इंटीजर्स. सो अंडर एडिशन ये जो सेट है इट विल फॉर्म अ ग्रुप. नाउ सो it will be very easy to check closure. You add two integers, you get an integer. Associativity also, you do 2 plus 3 plus 1 is same as 2 plus 3 plus 1. This is the meaning of associativity, right? Because अभी हमारा जो operation है plus है, so it's not A dot B, it's A plus B. क्योंकि now we know what is the mathematical operation. So ये तो मैंने example के लिए किया है, आप in general भी ये देख सकते हो, associativity is going to hold. So what is going to be the identity of this group? 0. 0. So 0 will be the identity element because किसी भी integer में आप 0 add करो and the answer is always the same. So we know 0 is the identity, and what is going to be the inverse? Negative of the number. Negative of Negative, yeah, so negative of that. So m में मैं minus m add करूंगी, so I know it's 0, and this is obviously the same way. A plus B is same as B plus A, same as the identity. अब identity कौन सी है जो आपने ऊपर डिफाइन की है. तो कभी भी जब आप किसी भी ग्रुप पे काम कर रहे हो, इनवर्सेस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. तो दैट्स हाउ द सीक्वेंस इज, पहले आइडेंटिटी पता करते हैं फिर हम इनवर्स पे जाते हैं. सो इज इट गोइंग टू बी अबिलियन? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So it's easy to see, right? कम्यूट करती है, इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो फर्क नहीं पड़ता है. सो सिमिलरली you can verify all those examples. The set of rational numbers under addition, so this is the notation for rationals under addition. So ये भी ग्रुप बनाएगा, ये भी अबिलियन ग्रुप बनाएगा. आइडेंटिटी इसमें भी 0 होगी और इनवर्स भी इसमें भी नेगेटिव्स ही होंगे क्योंकि अंडर एडिशन यूजुअली नेगेटिव से ही ऐड करेंगे तभी 0 आता है. Set of reals under addition, so this is also on the similar lines, you can prove this is also a abelian group. Set of positive rationals under multiplication. अब मैंने ऑपरेशन चेंज कर दिया है. आई एम वर्किंग ऑन rationals under multiplication, but not all rationals. I am taking only positive rationals. So this is a symbolic way to write q plus. So this q plus is कि only positive rationals.
जीरो भी नहीं. So you understand the difference between positive and non-negative, right? अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव नंबर्स, सो दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो. और अगर मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव नंबर्स, कोई भी रियल इंटीजर्स, कुछ भी कभी भी बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. सो जीरो इज इंक्लूडेड इन द नॉन नेगेटिव बट नॉट इन द पॉजिटिव. ये बहुत बात हमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, सो जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट. तो पॉजिटिव मीन जीरो नहीं है उसमें, और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का. देन इट विल फॉर्म अ ग्रुप. क्योंकि अगर मैं इसमें जीरो भी इंक्लूड करती हूँ, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या प्रॉब्लम आएगा? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हाँ, करेगा। जीरो का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप आइडेंटिटी नहीं. अच्छा, इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी? बिफोर टॉकिंग अबाउट इनवर्स यू शुड नो द आइडेंटिटी. 1. 1 राइट. सो 1. अब तो 1 आइडेंटिटी तक तो ठीक है ना. तो इसीलिए जीरो को एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि अगर जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तब हम आइडेंटिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे. जीरो इंटू एनी रैशनल नंबर कैन नेवर बी प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिटी. ये कभी नहीं हो सकता है, हमें पता है. तो दैट इज वाई इसको पॉजिटिव लिया गया है. अगर मैं यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिख दूं तो इमीडिएटली यू विल से इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म अ ग्रुप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीरो. तो बस ये जनरल ही हमें मतलब याद ही हो जाती है चीजें बाद में, कि जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो जीरो एलिमेंट्स होना नहीं चाहिए वहां पे किसी भी तरह का. Okay, then you have set of all n by n matrices under component wise addition. So matrices को भी आप matrices के सेट को भी ग्रुप बना सकते हैं. कौन सा ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया? कंपोनेंट वाइज एडिशन. Component wise addition, I just hope you understand. So it's you have 1 2 3 4 plus 4 5 6 7. So the component wise is like first element is added to first, second is added to second, third to third, fourth to fourth. This is how. और obviously आप matrices को add तभी कर सकते हो जब when they have exactly same order, right? दो square matrices को add कर सकते हो, means rectangular को भी कर सकते हो. For addition we know they should have the same order. तो यहाँ पे n by n लिए हैं और कंपोनेंट वाइज हमने उनको ऐड करना है. सो वट एवर यू गेट. सो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इस ग्रुप का? जीरो मैट्रिक्स. null matrix is going to be the identity matrix and inverse will be negatives, right? तो यहाँ पे या I should have written actually over reals. ऐसे मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो. मैट्रिसेस के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे वो बताना जरूरी है. रियल है, इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, तो यू शुड स्पेसिफाई. सो आई मिस दैट. वी शुड राइट वेयर आर दोज एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम, राइट? सो दिस विल बी डन. ये भी ग्रुप बनाएगा. विल दिस बी अबिलियन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि ऐड करने में मैट्रिसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में करो. मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में यू हैव द कम्यूटेटिविटी लॉस्ट. ए बी इज नॉट सेम एज बी ए व्हेन द मैट्रिसेस आर देयर. तो वहां पे यू हैव टू थिंक अबाउट, बट अंडर एडिशन दिस इज अबिलियन. ओके, देन यू हैव द लास्ट सेट ऑफ नॉन जीरो रियल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल्स लिए थे अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने रियल सारे लिए हैं, सिर्फ जीरो को छोड़ दिया है. अंडर मल्टीप्लिकेशन आई वांट टू सी. सो दिस इज डिनोटेड लाइक आर. वैसे तो आर स्टार भी एक होती है नोटेशन, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस जीरो, क्योंकि जब आपको सिर्फ एक एलिमेंट को ही एक्सक्लूड करना होता है, सो यू कैन यूज दिस. सो दिस माइनस इज नॉट दैट सब्ट्रैक्शन माइनस, दिस इज written like this. So you excluding zero and taking every real number. So this under the operation of multiplication is also going to form a group. So you can check all the properties. क्योंकि इनवर्सेस में वही प्रॉब्लम आनी थी जीरो की, तो जीरो को हटा दिया, रेस्ट ऑल इज फाइन विद अस. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. आप बुक से पढ़ोगे और उसमें आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स भी मिलेंगे. एंड we are almost done with time, so I will not continue. I'll just stop here. We'll continue from this point onwards in the next lecture. कल तो हमारा tutorial है, so we will see what we do in the tutorial. But that's all for today. You can ask me anything, any doubt if you have in today's lecture. So it's very elementary or basic, but फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो. We have 1 to 2 minutes with us.
Yes, any doubts? Okay, then if there are no doubts, then I'm just going to end this one. I'll see you tomorrow for the tutorial, same time, but on a different link. Yeah, thank you, everyone.